Good morning, honorable members. It's good to see you all back after a long gap. And I would like to wish a happy Solung to all the Adi community residing in Arunachal Pradesh. And you can see that there's a portrait laid on your table. We all know that narcissism is a basic human nature. So you can just admire looking at your own portrait. So I welcome you all again to this first sitting of 12th session of the 7th Legislative Assembly. And at the outset, we will take up obituary reference for the former legislators. First, I will take up obituary reference in respect of Sri late Kardu Taipodia, former minister. Late Kardu Taipodia, former minister, passed away on 4th May 2023 after a prolonged illness. He was born to late Lankar Taipodia and late Yajum Dini Taipodia in 1942 at Ripo village. He is survived by 2 wives, 4 sons and 2 daughters. He did his primary education in Sisi Borgaon in Assam and passed his matriculation from Government Secondary School, Alo, in 1963. Then he completed his graduation from Jawaharlal Nehru College, Pasighar in 1968. He was an active social activist from his schooling days. He was a member of Akhil Bharatiya Vidyalaya Parishad from 1964 to 1969 and president of Arunachal Pradesh Youth Congress Committee from 1976 to 1985 and chairman of the Northeast Youth Coordination Committee from 1976 to 1985 and the general secretary cum AICC member from 1989 to 1994. He contested the assembly election as a Congress candidate from undivided Alo Assembly constituency in 1984 and the Likavali Assembly constituency in 1989. He won the Likavali Assembly seat in 1994 and was inducted as a Minister, Tax and Excise, Transport and Rural Development. An obituary reference in respect of late Nilam Taram, former Minister. Former Arunachal Pradesh Home Minister Nilam Taram died at the Tomoriba Institute of Health and Medical Science at Naharlagun on 5th May 2023. Due to prolonged illness, he was 66 and left behind his wife, 3 sons and 2 daughters, along with many grandchildren. Born in 1957 at Deed village on the Jachuli circle of Lower Subansiri district, Taram served as a junior teacher from 1981 to 1983 before joining politics. He was elected as the first MLA from Yachuli Assembly constituency in 1990 and served as Civil Supply and Legal Metrology Minister in the Gegong Apang cabinet. He also served as Home Minister from 1991 to 1995. He was re-elected from the constituency in 1995 and inducted again into Apang's ministry as Home Minister for the 2nd term until August 23rd, 1996. Again, he served as a Congress Legislative Party leader from 1996 to 1999 and served as a leader of opposition in the state. Obituary reference in respect of Sri late Chao Tewa Men, former minister. Former Arunachal Pradesh Minister Chao Tewa Men died on 15th May this year after a prolonged illness. He was 80 and is survived by his wife, a son and a daughter. Born on 31st March 1943 at Chongkham village. Initially he did his schooling from Don Bosco School in Guwahati and graduated from B. Barua College, Guwahati. He served the people of our state in various capacity and contributed to its development during his illustrious political career. He was elected as a member Pradesh Council in 1972 and continued as member of Provisional Legislative Assembly when it converted on August 1975. In 1978, he was elected from Namsai Chokham
Assembly constituency and was among the first 30 elected MLAs of the state from Janata Party. Again, he contested from Chokham constituency and was elected as MLA in 1995, 2004, 2009 and 2014. He served as a horticulture minister in 1985 and as PHE and water supply minister in 1998. He also served as parliamentary secretary in animal husbandry, veterinary and dairy development department in 2009 and in environment and forest department from 2011 to 2019 till his retirement from active politics. During his long political career, he also served as a pro tem speaker of the Arunachal State Assembly on several occasions. With the demise of 3 former legislators, we have lost a great leaders. This is not only a great loss for the family members and dear ones, but also a colossal loss for the entire state. And one thing in common of all these 3 former legislators, they all were my father's colleagues, so I also know them personally and the family also. So now the members who would like to speak on the obituary reference may do so. Sri Dinongiri. Honorable Speaker, sir, I rise to give my condolences to the bereaved families along with my other colleagues. Like they say, a river, men may come and men may go, but I go on forever. Similarly, in this assembly also, we are all here today, tomorrow we may not be there. So, I will speak very briefly about the 3 of our departed souls who were with us. And it is my luck that I had interacted with all of them. Sri Karpadu Taipodia was a very jolly man. I think even till his death, he was young. Even at the age of 45, he was our youth president, very active, very jolly, and he never hurt even a single soul. So I'm sure our Honorable MLA from Lekhabali, Kardon Igyor, knows more about his family, and I hope that through him we convey our condolences, and we hope that Doni Polo, that his soul may rest in peace. About Neelam Taramji, I know him personally because we were very good friends in college. So we were together in college, and he was a Nishi with a separate vision, a separate attitude. When we were in college itself, we were there, Mr. Navamatum was there, Bengya Tolum was there, we were all together. And his concept, his vision was completely different. I personally know him because he was serving at an SSB. After serving in the SSB, he joined school. He is the first man, I think, to that traditional podum. He cut it because he wanted to go to school, take education, and he educated himself, even did his graduation. And after that, he became our colleague in this assembly. So, I am really, touched when I heard about his demise, because he had a vision, a modern vision. All the evils, or even, about before, let it be the Adi community, let it be the Nishi community, let it be Patani, or even our Mishmi brothers, we are slightly different, at least in merrymaking or taking too much of alcohol or Adi Apong. So he had that vision that no, the society has to change. We have to change our mindsets. So from the college days, I have seen him. He was an Adarsh man, Siddhantvadi,
And he really brought a change. Even the assembly, he has tried to do his best, tried to be a good leader, tried to be good representative in his constituency. About C.T. Main sir, I will not divulge myself too much on him because everyone will be speaking on his behalf. Because he is the man, he is the third generation leader, right from the agency councils, from his master's voice when the first gramophone was introduced by using the hand, till this modern age of computers or the modern age of mobiles, technology, IT technology. He was with us. So he bridged the gap from the old days of P.K. Thungon, Gegong Apang to the day of Pema Khanduji. So I really, my heart and soul is completely with our three friends, and the loss to us is very heartening. We hope that, sir, Mr. Speaker, that on behalf of all of us, all our members, you will convey our message to them that we have condoled them, we give our condolences and pray that may their souls rest in peace. Thank you, sir. Srimati Gumtain. Microphone. Thank you for giving me a chance to participate in the official deference. लोग का जो पुराना फर्स्ट जनरेशन का मिनिस्टर तीनू, वो तीनू तो हम लोग का भगवान ने अच्छा पाया इसलिए जल्दी ले गया। और नीलम तारम मोरिबा का मिनिस्टर टाइम में मिनिस्टर हुआ है, चीफ मिनिस्टर होने का टाइम में। और टाइप पर दिया तो ये गेगोंग अपंग का टाइम में, और हमारा सोतेवा में वो भी गेगोंग अपंग का टाइम में मिनिस्टर हुआ। वो लोग बहुत अच्छा आदमी था। और स्पेशली हमारा सोतेवा मेन हमारा मिनिस्टर एमएलए ने हमारे लिए वो क्लासमेट था। 1954-55 में हम लोग एक क्लास में है तेजू में। हम जब तेजू दैट टाइम हाई स्कूल था, तेजू हाई स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़ा 1954-55 में। और 55 में जब हम क्लास 6 पढ़ा हम लोग एक साथ, तो हम लोग एमई फाइनल उसी टाइम में आजकल जो क्लास 8 में एग्ज़ाम देता है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, वो क्लास 6 में होता था। इसलिए क्लास 6 में हम लोग एक साथ एग्ज़ाम दिया, पास हो गया बोर्ड एग्ज़ाम में करके। हम तो कंटिन्यू किया तेजू में और सोतेवा गुवाहाटी में चला गया डॉन बॉस्को स्कूल में। और उसका बाद में 20 में बहुत दिन नहीं मिला, मुलाकात नहीं हुआ हम लोग, इसलिए नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम जब 2013 में एमएलए बन के आया इधर असेंबली में, जब नाहर लोगों असेंबली हॉल में हम लोग मिल के थोड़ा सरप्राइज हो गया। अरे हम लोग छोटा टाइम में मिला था, अभी इतना बड़ा मिनिस्टर भी हो गया, एमएलए हो गया। ऐसा हम लोग मिलजुल के ऐसा लगोरिया बोल के बोल रहा था। सडनली दिस ईयर उसका ध्यान हो गया, हमारा बहुत दुख लग गया। और ये जो फेमस हम लोग का मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर चला गया हम लोग का बीच से, उसके लिए बहुत दुखी हूँ। और इसके लिए हम वो लोग का तीनों का फैमिली को कंडोलेंस मैसेज भेज रहे हैं जो आपका स्पीकर सर का थ्रू दी। और
on behalf of my people of my constituency, on myself, thank you. Next, Sri Karakokri. Thank you, Speaker, sir. I joined the House to deeply mourn the sad demise of former member of this August House, former ministers, Sri Karto Dabodeji, Sri Nilam Dharamji, Sri Chauteva Men. All these esteemed departed leaders have served the people in various capacities and immensely contributed towards the development of our state. They have left indelible marks on the hearts and minds of people of Arunachal Pradesh. I express my condolence and pray Amik Matai, Ringya Jab Malo to give enough strength to their bereaved families to bear these unbearable losses. May I take this opportunity to make special reference in respect to our esteemed leader, Sri Chauteva Man Ji, who has been iconic leader and first generation and political steward of the state. He was one of the founder members of Pradesh Council and Provisional Legislative Assembly of Arunachal Pradesh. As a living legend and statesman, he has played a pioneer role in drawing the developmental landscape of the state during his initial years. He has served the people of state in various capacities like Pro Tem Speaker, Minister, Parliamentary Secretary during his 47 years of political career and contributed a lot in process of our development. The people of undivided Lohit in general and people in Teju Sonpra always remember Sri Chauteva Man Ji as a family member. He used to extend his helping hands to Mismi community during the natural calamities, during the emergency period, especially when the mighty river, Lohit River, remains flooded during the past. Often his own residence gets threatened by the flood, but he continues to dedicate his service to the people, well-being of the area, without bothering about his safety. During his long political career, he has focused the attention of the House to the problem faced by the people of undivided Lohit. His dynamic leadership during his time of crisis served as a beacon of hope, inspiring us overcome even the greatest obstacles on the several occasions. In spite of adversities, he remained firm, never losing sight of the ultimate goal, well-being and uplift the people with more inclusive future for all. I'm privileged enough to start my political career and as a legislative career in 2004 under his elder guidance and affection. I always consider him as a friend, uncle, philosopher and guide. His noble vision and dynamic style inspired me a lot to work for the people of my constituency. As he was representing my neighbor constituency, Chokham, both of us worked together and served the people and always have a good discussion regarding developmental agendas of our people. His sad demise is personal loss for me and my family. People of undivided Lohit lost their great leader, all-time guide and conscience keeper. Now, Chauteva Man Ji is no more with us, but his untiring commitment to the development, equality and justice will enable our society to reach a new height. Let his legacy strive to make Lohit Namsai as well as Arunachal a better place with peace and harmony for future generations. With these words, I pay my sincere tribute to the departed all three leaders of the House. May Amik Matai, Ringya Jobmanlo give eternal peace to the departed soul
in the heavenly abode. Thank you, Speaker sir, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Sri Tana Halitara. मैं ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं सबसे पहले स्पीकर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 14 डोईमुख का पब्लिक की तरफ से और हमारे राज्य की पार्टी की तरफ से भी मैं कारदोता इपोदिया, न्यलम तरम, चोटामिन, इन तीनों का जितना भी सोल को मैं ईश्वर के आगे मैं उसको रेस्टोर करने के लिए और हेवनली फादर विल एक्सेप्ट ट्री ऑफ सोल कैन बी रेस्टोर इन द हेवन। इसके साथ साथ मैं 14 डोईमुख की जनता की तरफ से मैं न्यलम तरम जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, न्यलम तरम जी एक हम लोग का सोसाइटी का एक लीडर होने के नाते और हम लोग का जो अनडिवाइडेड सुबनसिरी, जो अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी अभी जो पपुम पारे जो चल रहा है, उसी का समय से जब 69 से उन्होंने जब उनको हमने मालूम हुआ है तो उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सा कार्य किया है और इविल्स और जो चीज़ को उन्होंने इरादिकेट किया है और हम लोग का सोसाइटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सा हमारा जो सोसाइटी को हम लोग का सोसाइटी जब उस समय में ऐसे सोसाइटी था कि किसी को मारधर करके भी हम मारधर किया बोल करके खुद जेल में चला जाते थे। इन सब चीज़ को उन्होंने इरादिकेट किया है हमारा सोसाइटी को और हमारा सोसाइटी को आगे ले जाने में उनका बहुत एक मेन रोल हम लोग के लिए किया है। तो इसलिए मैं न्यलम तरम का जो कार्य जो करते समय में हम क्लोजली मैं अरुणाचल के जब कांग्रेस का जब हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो करके जब सेवा दल में था उन्होंने उनको मैंने सावधान विश्राम कराया। उसका बाद उन्होंने जो जो हमने जो बोला है तो उस समय तो उन्हें मान करके जो हम लोग का साथ पूरा का पूरा प्रेत ग्राउंड में भी साथ में था और इसके साथ उन्होंने जो भी चीज़ को जब करता है और कभी नेगलेक्ट करता नहीं था। कोई भी पार्टी का काम हो, चाहे सोसाइटी का काम हो, चाहे हम लोग का जो भी, उसके बाद जब हमारा पपुम परे जब लोअर सुबनसिरी से जब डिवाइड हो करके आ गया था तो भी उन्होंने बहुत सा मेन रोल काम किया है और जब अपर सुबनसिरी लोअर सुबनसिरी जब डिवाइड नहीं हुआ था उस समय से उन्होंने कार्य करके हमारा ये के लिए, देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और हम लोग के लिए काम किया है। तो इसलिए मैं तीनों जो हमारा नेता इस देश के लिए एक हम लोग के लिए जो एक हमारा देश के लिए लड़ा, कारदोता इपोदिया और न्यलम तरम और ये शोमेन को मैं तहे दिल से हमारा परिवार की तरफ से और मेरे जनता की तरफ से उसका सोल को हेवनली फादर विल रिसीव एंड रेस्टोर करेगा बोल करके पूरा विश्वास है। इसी शब्द के साथ मैं हमारा स्पीकर सर को मैं धन्यवाद देता हूं और थैंक यू। Next, Sri Laisam Simai. I would like to request members to send your name through the chat, not through the chat. You have the IT facility there, please use that. Thank you, Speaker, sir. My name is Laisam Simai. I represent 51 Nampong Assembly Constituency.
I also raise here to take part in the obituary reference of the three veteran and very popular leader of our state, late Kardu Taipodia ji, late Nilam Taram ji, and late City Man Uncle. Sir, as we all know, human being is a mortal being, and there's a saying, there's a time for everything. A time to be born and a time to die. A time to sow and a time to reap. And there's a time of joy and a time of sorrow. The harsh truth the human being ever face in the life is death. This is the only gate where every human being on this earth should go through. Whether you like it or not, we have to face and come across this day, one or other. These three veteran leaders have been instrumental in making our state. Their contributions in whatever way for the all-round development of the state cannot be ignored. We acknowledge, as a member of this august house and a citizen of this beautiful state, the immense contribution that has been made by these former leaders of our state today. As far as Kardu Taipodia Sahab is concerned, sir, we were still a young boy at that time when they were a member of this august house. But as a young student, we used to hear that Taipodia Sahab is a very jolly man, very humorous man. And as a college student, I have seen him as the Minister of Transport, Excise. And in one of the occasions, I have seen him really, he was, wearing very tip-top suit, and he was really a jolly man. And in one of the TV interviews or some interviews, I saw him a clip. At the time, Honorable CM, then Gigong Apangji, he has given him a skirt. And he was so glad to wear that. And he said, I still remember, CM Sabi dise moi tu logam, jot hole bi moi logam. That kind of dedication and commitment he was, that kind of man I saw him. And as far as Nilam Taramji is concerned, everybody knows he was a very popular leader amongst the Nishi community, and at the same time he was a great orator and a great leader of our state. Particularly, he has also contributed a lot for the Christian community as far as I know him. And as a human being, he was very soft-spoken, very grounded, very, humble man. I've met him in several occasions in the church programs and other activities. He represents himself so simple that no one would ever recognize he was once a home minister of this state. Such a humble man he was. Sir, I would also remember late Chao Teva Menji, who was truly a great leader from the eastern side, eastern Arunachal. When he became a member of the Pradesh Council in 1972, that time we was not even yet born on this earth. And his long, illustrious career in the last 47 years as a member of this house is a history in itself. He was truly an institution. His vast knowledge and his service, dedication and commitment towards the development of the state is unparalleled. Sir,
When I was elected in 2014 as a young member of this house, we used to admire all the senior leaders and we go to them for their advice and suggestions. And city uncle would always say, "Bhai, তোমালোকে কাম ভালকে শিকিবি যদি ভাল লিডার হ'বলৈ হলে কামটো ভালকে শিকিবি assembly procedures ভালকে শিকিবি." That kind of very encouraging advices, and with compassion from his heart he used to suggest us, and that those words still resounds in my ears when I remember him. He used to always give good advices. He was very soft-spoken, very true gentleman. And I really feel very sad when Uncle was no more. Today, on behalf of myself and on behalf of the people of my constituency, conveys our heartfelt condolences to the families of these great leaders. Thank you, sir. Thank you. We have a long list of members who wants to speak on this obituary reference. So I would like to request all the members to, be, precise and to the point. That would be much helpful for all other members to take part. So now next, Sri Nyato Dukam. Speaker, sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in obituary reference. मैं चंद शब्दों में इन 3 महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कारदू ताइपोडिया साहब जो लिकावली से बिलोंग करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा चंद शब्द यहाँ हाउस के सामने रखना चाहूँगा। ये थे तो लिकावाली के, लेकिन दापोरिजो से वहाँ के एक लड़की से शादी की थी, तो इस तरह से हमारा रिश्ता बना है। तो इनसे बहुत दफ़ा मिलना हुआ, बहुत दफ़ा इनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उन दिनों मैं एक टीचर हुआ करता था, तो वो जो इनके जो बीवी हैं वो हमारे क्लासमेट थे, तो उस तरह से हमारा मिलना जुलना होता था। तो ये एक जिस तरह से लोग वक्ताओं ने कहा है स्पीकर साहब कि बहुत जोली आदमी थे, बहुत खुश मिजाज के थे, हमेशा उनके साथ बैठने से हंसी खुशी से रहने को एक मौका मिल जाता था। इस तरह का एक आदमी था। और उम्र तो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन 40-50 के बीच भी वो मेरे ख्याल से तब तक वो कांग्रेस आई के यूथ प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो हम मजाक में कहते थे कि आपका उम्र रहा नहीं है यूथ प्रेसिडेंट होने का। तो इस तरह से जब हम मजाक करते थे तो वो कहते थे कि जवान दिल से होता है, उम्र से नहीं होता। इस तरह से वो थाल जाता था। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जो फैमिली है, 2 बीवियाँ हैं और बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन लोगों को बस ईश्वर ताकत दे। और नीलम तरम जी से मुझे मिलना तब हुआ जब लेट दूलम, तदक दूलम जब मिनिस्टर थे यहाँ नीति बिहार में होते थे। तो चूँकि तदक दूलम जी मेरा ससुर थे, तो वहाँ नीति बिहार आना जाना होता था, वहाँ रहना होता था। तो नीलम तरम जी से मिलना होता था। तो बहुत सारे बात इनसे सीखा है, लाइफ के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, बहुत सारा बात वो बताते थे। लेकिन बहुत सॉफ्ट स्पोकन एक सज्जन आदमी थे। तो इनके भी जो फैमिली है उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो बाल बच्चे हैं, जो बीवी हैं, उनको भी ईश्वर ताकत प्रदान करें। और उसके बाद अंत में मैं चौ तेवामेन जी साहब के बारे में थोड़ा सा बात रखूँगा। एक 3 ईयर तो मैं उनके साथ बीइंग एमएलए यहाँ इस हाउस में रहा हूँ। बहुत कम बात करने वाले में से थे।
तो फिर भी हम जाते थे उनसे एडवाइजेस लेने के लिए, बहुत सारे काम उनसे करवाते थे। तो बिना कुछ बोले ही कर देते थे, कभी हाँ या ना करते नहीं थे। तो कागज़ दिखाते थे तो कुछ ना कुछ लिख देते थे और कहते थे कि ऑफिसर्स को तंग मत करना, मेरा नाम लेके ऑफिसर को तंग मत करना। और बहुत ज़्यादा वो आसामीज में बोलते थे, तो हम लोग आसामीज में थोड़ा कमज़ोर है, तो कभी कभी हम हिंदी में जब बोलते थे तो वो बोला तुम लोग आसाम के सामने के हो, तुम लोग आसामीज नहीं जानते हो क्या, इस तरह से 2-4 बार हम लोगों को कहते थे। तो इतना सज्जन आदमी था। उसके बाद जब मैं बहुत कम समय के लिए जब मैं मंत्री था, तो उनके घर भी एक बार जाना हुआ, वहाँ चौगाम में। वहाँ उनके जो फैमिली के जो जितने मेम्बरान हैं, उन लोगों से, सब बच्चों से भी सबसे मिला हूँ। जिस तरह से उनका ये संस्कार था, उनके फैमिली के लोग भी बहुत संस्कारी लोग थे। ये देखकर बहुत अच्छा लगा था कि जैसे पिताजी होते हैं वैसे बच्चे भी होते हैं। तो मैं आखिरी में मैं स्पीकर सर, मैं ये 3 महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से मैं एक कंप्लेन करना चाहता हूँ इस सदन से कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया, सृष्टि किया, लेकिन शायद ईश्वर का भी मजबूरी रहा हो, वो मौत ना बनाते तो कितना अच्छा होता। थैंक यू वेरी मच। Next, Sri Kardonigiar. Thank you, Speaker, sir. I am Kardonigiar, representing 20th Likavli Assembly constituency, and raised here to participate in the Mosam of obituary reference of the late Kardo Taipudia, late Nilam Taram ji, late Cho Tewamin ji. First of all, I want to say something about the Kardo Sahab. Kardo Sahab एक बहुत अच्छा आदमी थे, जोली थे, और खुद को एक हमेशा यूथ समझते थे। और इन्होंने अपना कार्यकाल में, जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट अंचल समिति रहा, उसका बाद एमएलए रहा, मंत्री रहा, और अपना क्षेत्र में जो काम किया, आज तक इनका निशान मौजूद है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और कार्दो साहब ऐसा एक अच्छा फादर भी थे, क्योंकि इनका 4 बेटे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस आइकॉन है, और 2 आपका डॉटर्स भी हैं, 2 डॉटर्स, एक जो है डॉक्टर है। तो ऐसा करके लीडर करने के साथ साथ साहब ने अपना परिवार को, अपना बच्चा को कैसे एजुकेशन कराना चाहिए उसी को भी ध्यान देते थे। तो कुल मिलाकर के काडू साहब हमारा लिकावली कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा रिप्रेजेंट किया, आज तो लोग याद करते हैं। और सर ने जो काम किया उसको यहाँ रखने से तो बहुत समय लगेगा। मैं संसद में कुछ सर का कुछ बारे में कुछ रखना चाहता हूँ। काडू साहब का पिताजी थे लेंकार ताइपुडिया, और उसका माताजी थे याजुम देने ताइपुडिया। इनका जन्म 1942 को रिपो बस्ती में हुआ था, लिकावली सर्कुल में। इनका 2 पत्नियां हैं और 4 बेटा है और 2 बेटियां हैं। He did his primary education at Sisiborgao, Assam, and matriculation during 1963 from Alo Secondary School. Now it is upgraded to higher secondary school. He completed his graduation in arts from Jawaharlal Nehru College, Pashigarh during 1968. He was very interested in social work from his childhood, and he was member of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad from 1964 to 69. He was elected Vice President of Likavali Gensi Anchal Samiti during 1977 to 1980. He was the President of Arunachal Youth Congress from 1967 to 1985 and General Secretary cum member All India Congress Committee during 89 to 94.
He contested assembly election as INC nominee from Alo Assembly constituency during 1984 and Likabali Assembly constituency during 1990. Unfortunately, he defeated in both elections. He again contested assembly election as INC nominee from Likabali Assembly constituency during 1995, and he won the election with huge margin, and he was inducted as cabinet minister under Apang ministry. He held many ministerial portfolios like tax and excise, transport, RD, etc. During his tenure as minister, he got approval for construction of route from Gensi to Siburit, covering total length of 65 kilometers under basic minimum services scheme, and still that road is popularly known as Kardu route. He breathed his last at Lepu village on 4th June 2013, not May, and laid to rest on 5th June 2013 with state honor. Through you, Speaker Sir, I want to convey my heartfelt condolence to the bereaved family to bear the irreparable loss. May departed soul rest in peace. इसका बाद मैं ताराम सर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. Though I was not associated with him personally, लेकिन हमने सुना था ताराम साहब बहुत एक अच्छा आदमी था, एक टॉलेस्ट स्पीकर था निसी कम्युनिटी में, और पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने जूनियर टीचर भी हुआ करता था, और वो एक थिंकर भी थे, राइटर थे, सोशल वर्कर थे और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और इनका आत्मा को शांति देने के लिए मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ. और थ्रू यू स्पीकर सर, मैं फैमिली को अपना हार्टफेल कंडोलेंस को कन्वे करता हूँ. इसका बाद सिटी मीन सर को हम पूरा समय के लिए मिला था ये असेंबली में. मैंने बाई इलेक्शन में आया था 2017 को, और सर को कुछ दिन मिला था. तो सर एक आसामीज बोलने वाले एक लेजिस्लेटर थे और एक लर्नेड आदमी थे, और सर का बायोग्राफी को देखा है तो इन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल से एजुकेशन प्राप्त किया, ग्रेजुएशन गुवाहाटी से किया. तो कामती कम्युनिटी में वो एक टॉलेस्ट स्पीकर थे, और कम्युनिटी को टॉर्च बियरर का हिसाब से सर लेके शुरू से चला है स्टूडेंट पीरियड से, और इनका अपना जो विधायक का कार्यकाल और मंत्री का कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया. आज उसका जो फ्रूट्स है उसको हमारा यंगर जनरेशन ने उसका हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत सराहना है. मैं सर को, सिटी मीन सर को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ थ्रू यू स्पीकर सर, और इनका महान आत्मा को शांति देने के लिए ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ. इसके साथ मैं अपना यही समाप्त करता हूँ. थैंक यू. Thank you. Next, Sri Honchunandam. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, I am participating in the obituary defense of the three late legislator, Chow Tevamen, sir, Kado Taipodiaji, Nilam Tiram, sir. यहाँ 1995 से इस सदन में आके हम लोग कितना हमारा लेजिस्लेट लोग का ओबिचुरी रेफरेंस में हम लोग पार्टिसिपेट किया होगा, नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग. काफ़ी लोग इस स्टेट को चला के काफ़ी लोग इस दुनिया से चला गया है, और अभी हम लोग का पीरियड है, हम लोग का टाइम है. तो सोचने से दुख भी लगता है, लेकिन दुख भी नहीं होना है. ये वीरे फैमिली मेंबर्स लोग को लाइफ एंड डेथ इज एट द हैंड्स ऑफ गॉड. हमारे वांचों में एक कहानी है, कहावत है, भगवान ने जिस दिन ये पृथ्वी बनाया और इंसानियत को बनाया, तब भगवान ने उल्लू को अनाउंसमेंट करने के लिए भेजा था, बोला है
इंसान नहीं मारना है, सांप मारना है। लेकिन उल्लू ने गलती करके उल्लू ने रॉन्गली अनाउंस कर दिया इंसान मारना है, सांप नहीं मारना है। इसलिए सांप जो है सीजन में अपना चमड़ा को लूज करके सांप ऐसे मरता नहीं बोलता है, लेकिन इंसान जो है एनी टाइम मरता है। तो उसका गलती का वजह से सब लोग आके उसका माथा में नकल किया, तो उल्लू का माथा इसलिए फ्लैट हुआ बोल के हम लोग का कहावत और कहानी है। सिंस दैट टाइम टू टिल डेट इंसान जो है एनी टाइम एट एनी आवर एनी डे एनी मंथ में मरता है। दैट इज एट द हैंड्स ऑफ गॉड। The birth and the death of the human being is beyond the philosophy of human being. It is beyond the understanding of human being. It is beyond the concept of human being. It is beyond the thoughts of human being. क्रिएट भी भगवान ने ही किया है, और मरना, जल्दी मरना या धीरे धीरे मरना या बुरापन में मरना, ये सब भगवान का हाथ में है। We the human being only can pray. On this earth, we can only do our duties and responsibility. लेकिन किसी को हम लोग बचा नहीं सकता, चाहे रुपया वाला हो, चाहे धन दौलत वाला हो। लाइफ एंड डेथ इज एट द हैंड्स ऑफ गॉड टोटली। इसलिए प्रोवर्ब है, मैन इज मॉर्टल, वी कैन नॉट अवॉइड इट। हम इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम में से या जिन्हें आप कमिंग जनरेशन है, इन्हें जल्दी ना मरे। लेट देम ग्रो, लेट देम बिकम मैच्योर, एक्सपीरियंस एंड डाइट इन टाइम। ऑल एज में मरने से अच्छा है, मरना तो है ही, लेकिन ऑल एज में मरना अच्छा है। तो सर ये दुख है हमारा। हम शुरू करेंगे हमारा चौथेना मेन सिटी मैन सर से। सिटी मैन सर जो है, ही हिमसेल्फ इज द हिस्ट्री, हिज डीड्स आल्सो हिस्ट्री, हिज एक्टिविटीज आल्सो हिस्ट्री। और 1972 से प्रदेश काउंसिल का मेंबर बना। 1972 में तो हम लोग स्कूल भी नहीं गया, और 75 में प्रोविजनल असेंबली का मेंबर भी बना। 75 में भी हम तो स्कूल नहीं गया, लेकिन इतना 72 से 75 एल द लास्ट मोमेंट, और इस साल वो गुजर गया है। तो उसका लाइफ ही, उसका कैरियर ही, उसका एक्टिविटीज ही हिस्ट्री था फॉर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पार्टिकुलरली ईस्टर्न साइड का। वो बहुत सीनियर सिटीजन था, वेरी हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी इंटेलिजेंट। और हम कभी कभी जब वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था लास्ट मोमेंट में और फॉरेस्ट का, उसका घर में जाके मैं कभी कभी, वो सीनियर सिटीजन है, विद ह्यूज रिस्पेक्ट, साथ में बैठ के हम कभी कभी हाथ का चमड़ को टालता था। सर आप तो अपनी तो बुरा हो, इसलिए तुम्हें भी बुरा हो वो एक दिन, ये तो नेचर हो बोले ही, वो ऐसे जवाब दिया था। हम अभी भी याद थे। तो उसे हम लोग बहुत काफ़ी गाइडेंस लिया, और वेरियस कैपेसिटी में जब 95 में हम एमएलए बन के आया, तो वो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर था, और अन्य डिपार्टमेंट वो वेरियस कैपेसिटी में वो अरुणाचल के लिए जो सेवा किया है, या डिस्ट्रिक्ट के लिए या कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये सेवा किया है, उसका सेवा, उसका डीड्स, उसका एक्टिविटीज़ हम याद रखेंगे। हिज डीड्स एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी को हम लोग याद रखेंगे, और उसको भी हम लोग याद रखेंगे थ्रू हिज डीड्स एंड थ्रू हिज कैरियर, थ्रू हिज एक्टिविटीज़। For a long time he has served this state. He must be the most senior most citizen of this state. उसका जन्मदिन तो हम 1939 देखा था who is who में, लेकिन आज तो यहाँ लिखा है 1943. Which one is perfect I do not know. लेकिन 1939 हो सकता है, लेकिन हम देखा था 1939. तो हम अपना लोग को बोलता था, देखिए ये सिटी मैन साथ, देखिए ये इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस जन्म होने वाला लोग है, तो उनके साथ में हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद में जन्म हुआ लोग, हम लोग साथ में काम कर रहा, बोल के कभी कभी अपना अपकमिंग जनरेशन को हम समझाता था। सो आई विल प्रे फॉर हिज इटर्नल पीस इन हेवनली बॉडी। नेक्स्ट कार्डो टाइपोडिया सर, हम 95 में आके उसका साथ में भी काम किया। आई वॉज लकी इनफ, ही वॉज ए मिनिस्टर, तो ही वॉज वेरी एक्टिव स्मार्ट, सचमुच में जोली ही था। ही वॉज एक्टिव स्मार्ट एंड जोली। कभी कभी पार्टी में प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा नाश्ता भी था, गाता भी था, वो रुमाल लेके ऐसे नाचता था, हम लोग को सबको पूरा जगह देता था, खुशी करा देता था। तो वो कुछ काम में वो पेंडिंग रखने वाला आदमी नहीं था, हाँ अगर सके तो जल्दी करने वाला आदमी था।
नहीं सकने वाला अलग बात होता था, लेकिन वो पेंडिंग करके कुछ चीज़ में, फाइल में, एक्टिविटी में पेंडिंग रखने वाला आदमी नहीं था. So we remember him and he has contributed a lot for his constituency and state as a whole. So we remember him and his deeds. हमारे नीलम तारम सर जी, उसका साथ में हम लोग काम किया 95 में आके. He was the home minister. He was very peaceful, very humble, very genuine person, soft spoken. वो ऐसे क्रिश्चियन लीडर, हम लोग को क्रिश्चियन लीडर लोग को कभी कभी बुला के ब्रेकफास्ट भी खिलाता था. तो वो बोलता था हम ऐसे भी क्रिश्चियन लीडर हैं, स्टेट के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लोगों के लिए शांति से काम करना है, जोरदार से काम करना है, झगड़ा नहीं होना है, मारपीट नहीं होना है. हम लोग तो यंगर था, वी वर यंगर पीपल टू हिम. तो हम लोग को अच्छा से सिखाता था, संभालता था ऐसे होम मिनिस्टर के हिसाब से भी और इंडिविजुअल लेवल से भी. तो ये आज हम लोग इनका ऊपर में ऑब्वियसली रेफरेंस में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सोचने से तो हम लोग बहुत दुख है. लेकिन I must say that I am the lucky person to be with them during their ministership in various capacity. तो सर मेरा तरफ से on my own behalf and on behalf of my family members and on behalf of my 60 assembly Pongcha Waka assembly constituency and on behalf of people of Longding district would like to convey my condolence to the bereaved family members of these 3 legislators. I would request you to convey through you, sir. With these few words, I conclude my speech. Thank you. Next, Sri Chao Jingnu Namsam. Thank you, Speaker, sir. I'm Jingnu Namchum, representing 47 Namsa Assembly constituency. Thank you, sir, for giving me the opportunity to participate in the obituary reference in respect of late Kadu Taipodia, former minister, late Nilam Taramji, former minister, late Chautewa Main, former minister. Sir, I would like to bring to the notice of this House that all these former great leaders were once colleagues of my late father, who were together ministers in Apang Saab's government. कि काजो ताइपोदिया साहब एक बहुत ही खुशनुमा मिजाज के एक व्यक्ति थे और उनके समय, उनके मंत्रीकाल में उन्होंने अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारा काम किया. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका परिवार को शांति दे और आपके माध्यम से कॉन्डोलेंस भी देना चाहूँगा. इसके बाद सर हमारे लेट नीलम ताराम साहब, उनको सर मैं मिला हूँ 2-3 बार. जब वो ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जा रहे थे, एयरपोर्ट में मैंने मिला तो मैंने पूछा उनसे कि हमारे एयरपोर्ट में जो हमारा प्रोटोकॉल ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि ये नीलम ताराम साहब है. तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं जिग्नू नामचुम हूँ, आपका मित्र लेट सीपी नामचुम का बेटा, अभी मैं विधायक हूँ और अपना देश के लिए काम करता हूँ. वो बहुत खुश हुआ, बोला अरे जिग्नू नामचुम तेरा पिताजी मेरा एक दोस्त हुआ करता था उस ज़माने में, हम लोग मिल के बहुत काम किया. तो उनको 2 बार मिला सर एयरपोर्ट में. उनका भी अभी अकाल मृत्यु हो गया बीमार के कारण. मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार, हमारे नामसाई ज़िले के सभी जनजाति के तरफ से कॉन्डोलेंस व्यक्त करना चाहूँगा. सर लेट चौतेवा मीन साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर थे और हमारे खामती समाज के बहुत ही ऊंचे कद के नेता, उनके बारे में सभी ने कहा है और मेरे बाद और भी हमारे मित्र विधायकगण भी कहेंगे. सर इनका, मेरा सिटी मीन साहब मेरा मामा जी लगते थे. मेरा पिताजी के साथ उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ, दोनों मिलके इस सदन में भी विधायक रहा, अपना समाज के लिए, अपना प्रदेश के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने. मेरा उनसे फर्स्ट इंटरेक्शन एज ए यंग एंटरप्रेनर सर 1995-96 में हुआ. 94-95-96 जब सुप्रीम कोर्ट ने टिम्बर इंडस्ट्रीज़ को ब्लैंकेट बैन किया, तो उनके साथ में दिल्ली गया. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में हमारा केस लग गया था, तो हम लोग दोनों गए. तो वहाँ कोर्ट हियरिंग हो रहा था, जीवराज का जी था. तो उस समय उनके साथ में गया, तब उन्होंने मुझे कहा जिग्नू अभी
तुम बच्चा नहीं रहा, अभी तुम बड़ा हो गया है, तो तुमको आगे आना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। तुम्हारा पिताजी भी इतना काम करके आया। तो हम लोग दोनों सर वहाँ दिल्ली गए, कोर्ट में हम लोग पेशी किया, हम लोगों ने वहाँ आंसर्स जो भी देना था देख हम लोग वापस आए। उसके बाद से सर मेरा मिलना जुलना होता रहा। मैं जाता था आलूबारी, जहाँ मामा जी का घर हुआ करता था, तो वहाँ जाके उनसे मिलता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ। ऐसे करके सर पूरा काफ़ी समय हम लोगों ने साथ में बिताया। उसके बाद सर जब मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ, तब मैं उनके साथ पार्टी का अफेयर काम करता था। वो मंत्री हुआ करता था, विधायक हुआ करता था, उनके साथ पार्टी का काम करते रहता था। वो गाइड करते थे, जिंगो ऐसा ऐसा करना चाहिए, एज ए यंग लीडर एक दिन तुम्हें भी विधायक बन के आना पड़ेगा, अपना प्रदेश के लिए काम करना पड़ेगा, अपना समाज के लिए काम करना पड़ेगा। तो 2014 में जब मैं विधायक बन के आया यहाँ इस असेंबली हाउस में, फिर उनके साथ 5 साल काम करने का मौका मिला। उनका बहुत सारा एडवाइस मिला मुझे किस प्रकार से हमें काम करना है। वो सदन में कभी कभी खड़ा होकर कहते थे कि जब वो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था, हॉर्टिकल्चर को किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में एक्सेलरेट करना है, किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर को आगे बनाना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक एग्रीरियन स्टेट है जहाँ खेती बाड़ी करना ही हमारा मेन पेशा है। तो कहते थे कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने से अरुणाचल प्रदेश का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो आज हॉर्टिकल्चर बहुत आगे बढ़ चुका है, उनका भी उसमें बहुत सारा योगदान रहा। जब 2004 में फ्लड हुआ तो मैं गया एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसके घर में, तो पूरा डूबा हुआ था। तो वो और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, हम लोग दोनों ने नामसाई तब डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, एडीसी ऑफिस से पूरा राशन लेके नाव में उठ के दोनों लुंगी पहन के माबीरा मरापात बोल के आदि बेल्ट है, वहाँ हम लोगों ने राशन देने के लिए गया। वहाँ राशन दे के आने का बाद फिर चाकमा बस्ती में हम लोग गए राशन देने के लिए। उस समय एडीसी हुआ करता था आर के शर्मा साहब, बहुत सहायता किया। सिटी मीन साहब हम दोनों को बोला, जिंगनो कहाँ कहाँ ये हो रहा है, आप लोग जाओ, चावल दाल खाने का सारा सुविधा हम लोगों ने प्रबंध किया। तब देखा मैंने सिटी मीन साहब इतना उम्र होने के बावजूद अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पब्लिक है उनका दुख में शामिल हुआ और मेरे को साथ में ले गया, क्योंकि मैं जवान था। चलो तुम जवान लड़का है, तुम नाव में आगे बैठो, मैं पीछे, दोनों मिलके हम लोग माध्यम से इनके परिवारों को मेरा भी कॉन्डोलेंस पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बालू राजा। थैंक यू स्पीकर सर। मैं बालू राजा, ये कॉन्डोलेंस मैसेज ये हमारा लेट कार्दो टैपोरिया एंड लेट नीलम तरम, लेट सिटी मिंसार का साथ। ये ऐसे टाइपोरिया का लेट टाइपोरिया का कोट हम कभी एक बार ही मिला, एंड अभी फॉर्मर स्पीकर को बोला है कि वो एक यूनिक एंड एक ह्यूमरस आदमी था। लखीमपुर आईवी में हमने एक बार मिला था जब हम जीरो से आया, उस समय में लखीमपुर में हम आईवी में देखा तो उसका गाड़ी में कैबिनेट मिनिस्टर को लिख कर रखा था। तो हम उनको मिलने के बाद हमने उसको पूछा, सर क्यों आप कैबिनेट मिनिस्टर लिखा, कैबिनेट तो है। तो बोला कि नहीं, उस समय में शायद 97 में था होगा, 50 एमएलए ही मिनिस्टर है, मतलब कोई डिप्यूटी कोई स्टेट मिनिस्टर, इसलिए अलग ही नाम रखने वाले। तो उस ढंग से उसको मिला। तो इसलिए हमारा फैमिली का तरफ से मैं अपना पर्सनल तरफ से हम लेट टाइपोरिया का फैमिली को मेरा कॉन्डोलेंस। एंड निरंतरम साहब को 98 में जब हम कांग्रेस का एज ए पार्टी वर्कर के हिसाब से था, उस समय में वो कांग्रेस का अपोजिशन लीडर में था। एज ए पार्टी वर्कर उसका साथ में हमने काफ़ी काम किया। तो रैली एक निरंतरम हमारा निश्चित सोसाइटी में एक बहुत बड़ा लीडर था एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल था एंड मैन ऑफ रिलीजन था। तो इनका जो लॉस जो हुआ है, तो हमारे निश्चित सोसाइटी, पार्टिकुलर निश्चित सोसाइटी के लिए बहुत लॉस है। तो इसलिए ऑन माई बिहाफ ऑफ कराडी डिस्ट्रिक्ट, ऑन माई फैमिली मेम्बर, ऑन माई पर्सनली, हम मेरा कॉन्डोलेंस उसका फैमिली को। एंड लास्टली हम सिटी में सर को जब 2004 में हम एज ए इस सदन में हम जब एमएलए बनकर आया बीजेपी
पार्टी से, उसने भी बीजेपी पार्टी से इलेक्ट होकर आया था। फर्स्ट जब उसको मिला तब से लेकर शायद लास्ट तक हमने बहुत उसका साथ क्लोजली रहा। एंड उसने हमको, वो मेरा लिए शायद एक पिताजी का रूप में था, एक भैया का रूप में भी था, एक मेरा दोस्त का रूप में भी था। उसने बहुत कुछ जो भी आज हमने थोड़ा सीखा है शायद उसका थोड़ा से हमने सीखा है, क्योंकि उसने हमको फर्स्ट मिलते साथ से बोला, तुम्हें देखी भी तुम्हें निशी हो, तुम्हें निशी नहीं हो गई, उसका भी एडवाइस था। एंड साथ में सबसे बड़ा बात उसने हमको बोला है कि तुम कभी भी तुम्हारा एमएलए का प्रोटोकॉल, एमएलए का स्टेटस को तुम दिल से एक्सेप्ट मत करो। तुम सकता है तो मेरा एडवाइस है तुम उसको बाहर में रखो। जब स्टेटस एंड प्रोटोकॉल को जब अगर तुम दिल से एक्सेप्ट करेगा, तुम बाद में जब पोजीशन में नहीं होगा तुमको बहुत तकलीफ होगा। तो वही हमको एडवाइस किया। इसलिए आज तक सचमुच में एमएलए का स्टेटस, एमएलए का प्रोटोकॉल हम कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, हम बाहर में रखा है, अलग दुनिया में रख कर हम चलता है। तो इसलिए जो असेंबली में किस ढंग से क्वेश्चन करना है, किस ढंग से प्रोसीडिंग करना है, उसने हमको बहुत कुछ गाइड के अंडर एज ए अपोजिशन लीडर उसको भी देखा, क्योंकि हम लोग अपोजिशन में था 2004 to 2008 अपांग साहब का गवर्नमेंट, उसमें भी देखा। एक समय अभी प्रेसिडेंट डीसीएम साहब है यहाँ में, उस समय में शायद वो एजुकेशन मिनिस्टर था। असेंबली में उसने क्वेश्चन किया इनका डीसीएम साहब को कोई टीचर पोस्टिंग का बात लेकर, तो हम उसको सर को पूछा, सर अरे अपना भाई को क्यों आप असेंबली में क्वेश्चन पूछे? वो हमको बोले देखो फैमिली अलग, एज हम अपोजिशन लीडर, हम स्टेट के इंटरेस्ट में ये मेरा ड्यूटी बनता है। तो इसलिए रियली सिटीमैन सर को वो मेरा ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था कि, क्योंकि उसका एक हमको याद है कि वो हमको नमसाई से हमको गुवाहाटी बुलाया, तो हम यहाँ से गुवाहाटी गया तो क्या है बोला, तो वो बोला कि हम एक इनोवा गाड़ी लेना है, तुम फर्स्ट टेस्ट ड्राइव करो, अगर तुम सही ठीक है बोलते हैं तो हम गाड़ी को लेगा। तो उस ढंग से हम लोग का एक फैमिली रूप में हम रहा। वो मेरा लिए पिताजी था, मेरा लिए भैया भी था, मेरा लिए एक दोस्त भी था। इसलिए सिटीमैन का साहब का जो जाना मेरा लिए, मेरा पर्सनल लाइफ में बहुत हमने खोया, लॉस हुआ है। इसलिए ऑन माय पर्सनल एंड माय फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, हम इनका आत्मा को मेरा कंडोलेंस उसको देता है कि वो मेरा हार्टफुल ये प्रेयर्स फॉर इंटरनल पीस लाइफ, इनका आत्मा शांति के। थैंक यू। नेक्स्ट श्री न्यामर करबा। Thank you, sir, for giving me a chance to participate in obituary reference to three great departed souls. Two of them whom I used to address as uncle. One I used to treat him as a colleague and a senior friend. May 2023 comes with three such sad news for all of us, for entire Arunachal Pradesh. Sri Neelam Taramji, former minister, passed away on 5th May 2023. Sri Chaut Devamin on 15 May 2023. Sri Kadu Taipadia again on May 4th, 2023. Firstly, Sri Neelam Taramji, I used to address him as uncle, as his elder son, Jan Neelam, was my senior in Delhi University. Since then, I know him. He was a very good person, very humble,
His demise is a great loss for the Nishi community and for Arunachal Pradesh. Chot Deva Minji, he used to address me as my young friend. I still remember all the words of blessings given to me. He used to advise me, guide me. A very simple person, very disciplined personality, very generous and very and his demise is also a great loss for the Kamti society and for Arunachal Pradesh. Sri Kadu Taipodia, I used to call him as uncle again. He is from my community, Galo community. When I get married my wife is from Likavali. One day he came to me and congratulated me for being married to a girl from Likavali. And from that moment he used to call me as Magbo. His demise is a great loss for Galo community and Arunachal Pradesh. He was a very simple man, full of joy. He is all great works for the West Siang, Likavali, and entire Arunachal Pradesh will be always remembered. At the end, I'd just like to say, nothing is permanent in life, so we all need to learn how to enjoy our present. People I love have come, have gone, but the world will never stop. And we all have to carry on. My deepest condolences to three departed souls. May their soul rest in peace. Thank you, sir. Sri Samlung Masang. Sri Samlung Masang. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me this chance to speak few words. I, Sri Somlung Mosang, representing 49 Bodumsa Dine General Assembly constituency. Speaker, sir, I stand here before this August House to express my sadness and appreciation on obituary references of our most valuable leaders who have left their early home to proceed to eternal abode. I want to express my sympathy to late Kadu Taipodia, former ministers, to late Nilam Taram, former ministers, and to late Chau Teva Men, former ministers. Three of them were men of great valor and learned politicians of Arunachal Pradesh. Speaker, sir, honestly speaking, I never had the privilege to personally meet late Kadu Taipodia ji and late Nilam Taram ji.
But during my young days, I was thrilled to hear the name of three said leaders as a stalwart politician of Arunachal Pradesh, and their relentless services for the welfare of state, which made me proud. However, I did have the privilege to personally meet late Chao Teva Menji twice, and he appeared to me as soft-spoken man and a visionary. Today, I am proud of these three great personalities who have left footprints for young politicians to achieve great things. Speaker, sir, I finally extend my sincere and prayerful condolences to all the bereaved families of late leaders, and most importantly, I pray for eternal peace of late Kadu Taipoji, late Nilam Taramji, and late Chao Teva Menji. So with these few words, I conclude. Thank you, Speaker, sir. Kentogini. Kentogini. Tabatedir. Shri Tabatedir. Srimati Jumum Ete Duri. Thank you, Speaker, sir. मेरा नाम जमा मेथी देवरी, मैं 48 लेकांग के विधायक। आज लेट कार्डो टाइपोडिया जी और नीलम तरम जी और चौटामीन जी का मैं एक दो बात बोलना चाहूँगी। ऐसे तो मैं कार्डो टाइपोडिया जी और नीलम तरम जी को नहीं मिला, लेकिन सदन पहले मेरा कॉलीग्स लोग ने बहुत अच्छा बात किया कि वो समाज के लिए और अपने स्टेट के लिए क्या काम करके गया। वो महान आत्मा के लिए जो काम करके गया वो हमेशा याद रखेंगे हम लोग। और मैं चाओ तेवामीन जी का बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा पिता समान भी था और मेरा गुरु जैसे भी था। जब भी मिलती हूँ मैं उसको, वो हमेशा बोलते रहता है, जो तुम्ही केने का कोरी ऐसो, केने का भाल के सोला ऐसो तो तुम्हार लेकांगों के, तो हमेशा ये बात बोलता था। और कैसे कैसे चलाना है, कैसे तुम नया अभी विधायक बन के आया, कैसे समाज को, कैसे तुम्हारा लेकांग को आगे लेके जाना है, हमेशा एडवाइस देता था। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और अभी वो जाने का एक सप्ताह पहले मैं मिलने के लिए गया था। 2 घंटा जैसे उसका साथ बैठा, उसने बोला तुम बहुत दिन का बाद आया हमको मिलने के लिए, तो बहुत बात बोला। इस बार इलेक्शन आ रहा है, तुम ऐसे ऐसे करना है, वैसा करना है, पब्लिक लोग का साथ ऐसे मिलना है। तो हम बोले सर आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो उसने बोला मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ है, तुम चिंता ही मत करो, तुम आगे बढ़ते जाओ। जब भी मैं मिलती हूँ सर, हमेशा ये बात हमको बोलते रहता था। तो दिल में एक जाने का बाद भी हम हमेशा वही सोचते रहा, ऐसे पिता समान, ऐसे गुरुजी मेरा जो उसका आशीर्वाद लेके मैं अभी यहाँ है सदन में। एक दिन तो सब लोग जाएंगे, जैसे आज हम लोग सबका 3 आत्मा का
Speaker, sir, I stand here to pay my respect in the arbitrary references to the former late members of this august house, late Kardu Taipodia ji, late Niram Taram, late Joe Tewamen, and former ministers. There is a saying that without memory, there can be no healing. And no civilization, no society, no future without memories. My association with the three honorable members may have been brief, but I have fond memories of them. It's fortunate that I had my association with the three of them. All three were remarkable men in their own sphere of influence, creating an atmosphere of goodwill in the society that they served, and leaving an impact in the state's polity. We should also remember the kindness that they had left behind. For every act of kindness is a piece of love that we leave behind. The three men were men of integrity, men who worked for the society, men who loved their families, and men who served the state. Their presence in this august house will echo in the chambers and in the walls of this august assembly. And it will reverberate to each and every nook and corner of the state that they had served with so much affection and dedication. I stand here, Speaker, sir, and through you would like to convey my deepest condolences to the bereaved families, and may God give them strength. Thank you, sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं यहाँ खड़ा हूँ आज ऑब्जेक्टिव रिफरेंस के लिए उन तीन महान व्यक्तियों के जिन्होंने मई महीना में 4 मई 5 मई और 15 मई को गुजर गए हैं। श्री लेट कार्दू तैपेदा जी, श्री लेट नीलम तरम जी, श्री लेट चौथाबाईमैन जी, इन महान आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अपने और अपने परिवार की तरफ से देना चाहता हूं। और ये जो महान व्यक्ति जो अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम किया, साथ ही साथ हमारे अपने राज्यों के लिए भी बहुत काम किया, पूरे देश के लिए भी काम किया। मैं श्री कार्दू तैपेदा जी को मैं जब स्कूल में था दिल्ली में 1981-82 में, उस समय की एक कहानी मुझे याद आता है। तो वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जब भी दिल्ली में आने से हमें स्टूडेंट को लेके सिनेमा दिखाना और मार्केट में ले जाना। एक बार मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ मार्केट में जाने के लिए, और मार्केट में गया तो जहाँ भी गया उनके पॉकेट से अपना पर्ची निकाल के दुकानदार को देता हूँ, मैं यूथ प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश करके सबको इंट्रोड्यूस करके सबको बताता था, जोली नेचर हंसमुख के। और बाद में जब मैं एक अफसर बना, उनको एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक टैक्स एंड एक्साइज मिनिस्टर के सब रूप में देखा। और सिटी मैन को तो मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं, लेकिन जब एज अफसर के रूप में देखा, एक सज्जन, एक अपने प्रांत के प्रेमी, देश के प्रेमी व्यक्ति थे, और अपने कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और साथ ही साथ अपने अरुणाचल के लिए भी बहुत काम किया। और ख़ास तौर पे मैं आज यहाँ अपनी ओर से लेट नीलम तरम के बारे में कहना चाहूँगा। नीलम तरम एक ऐसे व्यक्ति था जो हमारी निशी समाज के लिए एक बहुत बड़ा लीडर था, निशी समाज को बहुत आगे ले गया। उनके कार्यकाल में
बहुत सा सोसाइटी को चेंजेस को लेके आया। उनकी जन्म 21 मार्च 1957 लेट नीलम तेई एंड लेट तकोयमी नीलम दीद बस्ती में हुआ और उनकी पढ़ाई की शुरुआत दीद प्राइमरी स्कूल से लेकर जीरो और जॉन प्रांत मिशन स्कूल में असम में हुआ और ग्रेजुएशंस 1981 में पासीघाट JNC कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 1981 से लेकर 83 तक एक जूनियर टीचर बना और टीचर बन के उन्होंने कहा कि मुझे लोगों का सेवा करना है, मैं नौकरी नहीं करूँगा कहीं। फिर वो टीचर की सर्विस को रिजाइन करके 1983 से लेकर 87 तक और अंचल समिति वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्ट हुआ और लोगों के एक्चुअली एरिया लोगों के लिए सेवा किया। जब अनडिवाइडेड 0102 जब असेंबली सेगमेंट था, उन्होंने रोडोवर विधानसभा में चुनाव लड़ा, नतीजा हार हुआ, लेकिन हमारे 16 एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो क्रिएशन के लिए जब हाई पावर कमेटी आया तब उनके लीडरशिप में जोरदार फाइट करके हमारा 16 एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बना और फर्स्ट जब विधानसभा चुनाव हुआ 1990 में वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट होके और पहली बार मंत्री बना अपंग साहब के सिविल सप्लाई और इसके बाद होम मिनिस्टर्स दोबारा उन्होंने 95 में दोबारा इलेक्शन जीता और तब भी उन्होंने होम मिनिस्टर को दिया। उन्होंने अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए जब अनडिवाइडेड सुबनसिरी था उस समय में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। 1975 में वो ऑल सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन की सोशल सर्विस की सेक्रेटरी बना। 77 में उस समय में स्टूडेंट विंग में कहता था चीफ सेक्रेटरी बोल के उनकी जो स्टूडेंट यूनियन का उतना पद तक आया और 1970 से 72 तक प्रेसिडेंट निसी बाप्टिस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन की और प्रेसिडेंट रहा और NBCC की जो निसी बाप्टिस्ट काउंसिल की जो चार्ज की इसकी जब स्थापना हुआ उसकी प्रेसिडेंट 1977 से 1983 तक उन्होंने किया। आज जो अन्य है, जो अन्य कहते हैं निसी समाज में, जो एक उसकी जो निसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कहा करता था, उस समय में फाउंडर मेंबर भी था और फाउंडर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी थे। इसलिए जो 16 एक्चुअली में जितना भी आज डेवलपमेंट हुआ, पीसताना सर्कल का हो या ये दीद सर्कल का हो या याचली सर्कल का हो, एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। इसलिए मैं अपने ओर से नीलम तरम जी का परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। अंत में मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इन तीन महान व्यक्ति लेट कार्दू तैपदिया, लेट नीलम थारम और लेट चौथा एबामैन जी को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Sri Kentojini is the last speaker. So next, Honorable Chief Minister will make a statement. I did not receive. Anyway, I'll call your name. Thank you, Speaker, sir, for giving me a chance to give my condolence messages to great three leaders. Here I am representing 31 East Assembly constituency. Through you, I express my deepest sympathies to the bereaved families and praying for their eternal peace in heavenly abode. I met late Kadutai Podia, former minister, several times. During his ministership, though I didn't meet, he came to me as a client when I was a lawyer. But I never see him attention or panic. He always remained a jovial and very friendly. He was a first generation politician or a leader of a Galo community, and during his lifetime, he did a lot of developmental works for our community as a whole. And regarding late Neelam Taram sir, I was also very closely related to his family. I met
him several times. I used to visit his house, home. He was thorough gentleman and fatherly figure. By seeing his living conditions, I drew conclusion myself that he was a corrupt-free politician. And he was also first-generation politician from a Nisi community, and he had set an example for all politicians or leaders of Arunachal Pradesh how to live, how to lead the society. Regarding late So Tewamen sir, former minister, I never met him his lifetime, but I got opportunities to attend his funeral ceremony recently. Then I came to know by seeing the massive gathering during a funeral ceremonies. Then I came to know and that he might have lived a good life and fully assimilated with societies. For which reasons there was a massive gathering. हम जब जिंदा होते हैं तो रियलाइज नहीं करता है कि वो कितना अच्छा आदमी था. हम जब मरने के बाद बड़ी तादाद में जब आदमी आते हैं उसको गैदरिंग्स को पार्टिसिपेट करते हैं, देन हमको पता चलता है कि वो कितना आदमी अच्छा था. उसी प्रकार इस बार मैंने भी देखा कि लेट सोआ तेयामेन जी का फ्यूनरल में भी बहुत फैमिली मेंबर को भी देख के बहुत अच्छा लगा. वेरी सॉफ्ट और जेंटल. मैं इसीलिए 3 ग्रेट लीडर्स को सर आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरे ओबीसी रेफरेंस को भी मैं ही खत्म करता हूँ. थैंक यू. श्री नवम तुकी. Honorable Speaker, sir, I also rise here to participate in arbitrary reference of former Cabinet Minister, late Kadu Taipuria ji, late Nilam Taram ji, and late Chow Tewa Mein ji. The state has lost 3 great souls. A prominent veteran political leader, social cultural leader, the leader of past generations of the state of Arunachal Pradesh. Everybody believes that life is not permanent. One day or other day, everybody has to go the same destination. As I know, closely worked with these 3 important leaders of the state. First, I like to say a few words about the brother Kadu Taipuria ji. Since from 1984 onwards, I was closely associated with him when he was Youth Congress President of Arunachal Pradesh. And he was simple, a joyful person,
and one of the courageous leader. He was a good friend of former Prime Minister of India, Bharat Ratna Rajiv Gandhi ji also. I saw him directly talking to him from Itanagar over telephone. A man of so courage and close relation with such a big personalities in the country. And I have many things to say, but I'll not take much of your time. About late Nilam Taram, the former Home Minister. He was a man of the truthful and law-abiding. He was God-fearing and law-abiding person and faithful to the Lord. He was a good believer in his Christian community. I know him personally because he is from my own community, and the one was senior most leader of the community who worked anything in his constituency as well as in the state. And about Cho Tewamen, a former minister, a down-to-earth and honest and clean man. I saw him even in my life. We worked with him closely since from the very beginning when I entered into the state politics in many ways, in the party, in the government, in the society. And all three were most dynamic leader, and they contributed a lot for the socio-economic development of our state. Whatever the contributions they have made will be ever remembered, and it will remain immortal in the future. I don't want to mention all the occasions that which I work with them, but it is very important that we lost our great leaders, the seniors, the pioneers of this state in the field of social, cultural, and political and economic development. My deepest condolences to all the very family members of the three leaders. I could not able to attend the funeral services during the time when I was out of station, but I conveyed my condolences message through social media, which was available to me from the distance. So lastly, I pray Almighty God to accept them and their eternal soul in their kingdom for your eternal rest in peace. Thank you very much. Honorable Deputy Chief Minister. Honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir. Thank you for giving me time to take part in the obituary reference of the three great souls who has passed in this year. Late Kardu Taipodia ji, late Nilam Taram ji,
and late C.T. Menji. जैसे सभी ऑनरेबल मेंबर्स लोग ने जो ऑब्चुरी रेफरेंस में सब लोग ने जो पार्टिसिपेट किया, तो बहुत ही लेंथ एंड ब्रेथ में इन सभी जो महान नेताओं लोग ने जो स्टेट में जो कंट्रीब्यूट किया है उसका बारे में बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पे रखा है। और हम सबका ही मानना है, और बहुत सारा मेंबर्स लोग ने भी कहा है कि जब इंसान को जब जन्म मिलता है तो किसी न किसी दिन फिर हम सबको जाना भी होता है। आज इस सदन में बैठे हुए जितने भी मेंबर्स हैं, सबका जाना तो तय है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कोई आगे जाएंगे, कोई पीछे जाएंगे। मगर जाते जाते इस सदन में बैठ के सभी लोगों का कोशिश ये होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ में अच्छा काम करने के लिए, अपना समाज के लिए, अपना स्टेट के लिए। तो उसी प्रकार से जो तीन जो महान आत्मा आज हम लोगों के बीच में यहाँ पे नहीं है, उन लोग ने भी बहुत सारा अच्छा काम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना राज्य के लिए उन लोग ने करके किया हुआ है। मैं लेट करदू ताब्योदिया जी को फर्स्ट टाइम जब मिला था, उस वक्त में 2012 में जब मैं इस राज्य का टूरिज्म मिनिस्टर और WRD मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो जब हम होल्ड कर रहा था, तो उस वक्त में मैं सियांग पूरा बेल्ट में टूरिंग के लिए गया था। वहाँ पे WRD और टूरिज्म रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिव्यू लेने के लिए और ग्राउंड में प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए। तो उस वक्त हमको वहाँ लेखावाली में एक रात होल्ड करने का मौका मिला था। तो उस वक्त में लेखावाली में एक टूरिज्म का प्रोजेक्ट भी ऑनगोइंग वहाँ पे काम चल रहा था। तो लेट करदू ताब्योदिया साहब का बड़कपन है कि वो खुद हमको मिलने के लिए वहाँ पे सर्किट हाउस में वहाँ पे आया, और काफ़ी लंबे समय तक हम लोग वहाँ पे डिस्कशन किया। वही मेरा फर्स्ट टाइम था उनको वहाँ मिलने का जो अवसर था। और जैसे सभी मेंबर्स लोग ने जो कहा कि वो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी यूथफुलनेस एक पर्सनालिटी था, तो उनको मिलके ही हमको ये एहसास हुआ। और उसमें उन्होंने एक स्टेट का इंटरेस्ट के लिए उन्होंने हमको ये गाइड किया कि उन्होंने कहा कि आप तो स्टेट पॉलिटिक्स में अभी नया आया है और आपको लंबे समय तक यहाँ पे बैठना है, इसलिए स्टेट का जो मेन जो इशू है वो आसाम अरुणाचल बाउंड्री का जो मैटर है, बहुत लंबा समय से ये पेंडिंग है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट में बैठ के आप लोग इस चीज़ को भी बातचीत करके सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसी के ऊपर में काफ़ी लंबा उनका जो एक्सपीरियंस है और ग्राउंड में जो डिफ़िकल्टीज वो लोग जो फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमको काफ़ी गाइड किया। जब इनका निधन का जब खबर आया तो मैं टूर में था, तो इसका करदू ताब्योदिया जी को फ्यूनरल में हम पार्टिसिपेट कर नहीं पाया, मगर अपने ओर से मैं कंडोलेंस में पूरा अपना राज्य की जनता के बिहाफ में हमने यहाँ से भेजा है। सेकेंडली लेट निरंतरम जी जो फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ख़ास करके जितने भी जो अपना निशी समाज के लेजिस्लेटर्स जो यहाँ पे भाग लिया है ऑब्चुरी रेफरेंस में, उन सभी से ही पता चलता है कि लेट निरंतरम जो है काफ़ी हाई स्टेचर एक पर्सनालिटी हुआ करता था। और पर्सनली मैं लेट निरंतरम जी को बहुत पहले से ही जानता हूँ ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम्स, क्योंकि उनका जो लड़का है वो हमारा क्लासमेट भी है और हम लोग काफ़ी क्लोजली हम लोग फैमिली रिलेशंस भी हम लोग मेंटेन करके हम लोग चला है। तो लेट निरंतरम के बारे में उनका जो वहाँ के जो अभी विधायक है माय कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन श्री तबादरी साहब ने भी बताया उनका जो मेजर जो योगदान किस प्रकार से रहा है। और निनोंग इरिंग साहब ने भी शुरुआत निनोंग इरिंग साहब ने किया है। उनका लाइफ में भी बहुत सारा वेरियस फील्ड में वो काम करने का तजुर्बा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। आर्म फोर्सेस में भी वो सर्व कर चुके हैं, बाद में टीचर भी वो बन चुके हैं। टीचर के बाद फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उन्होंने करियर अपना शुरुआत किया। आई थिंक टिल 1991 होम मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है उस वक्त तक शायद जितने भी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं उन लोग ही शायद 1991 तक होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो CM ही देखता था। आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर फ्रॉम आवर स्टेट। 1991 से लेके उन्होंने एज होम मिनिस्टर कार्य का शुरुआत किया है। और उनका जो मेजर जो अचीवमेंट है, जैसे तबादरी साहब ने भी जो कहा कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही साथ जो हमारा जो डिविजनल कमिश्नर है जो अभी जो एक्चुअली में है,
वेस्टर्न डिविजनल कमिश्नर, वो भी उनका ही काफ़ी योगदान रहा है 1999 में उसको क्रिएशन के लिए। और हमें याद है कि 2018 में जब हम लोग ने तय किया कि एक्चुअली अपना जो डिविजनल कमिश्नर, वेस्टर्न डिविजनल कमिश्नर को वहाँ पे शिफ्ट करके वहाँ पे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जब सरकार ने जब हम लोग ने फैसला लिया, तो उसमें पर्सनली लीड निरंतरम जी ने हमको कॉल करके हमको काफ़ी थैंक्स एक्सप्रेस किया कि 1999 में जो वेस्टर्न डिविजनल कमिश्नर का जब अप्रूव हुआ, मगर वो ईटानगर से फंक्शनल कर रहा था, वो वेस्टर्न को भी वो शिफ्ट हो नहीं पाया। मगर हमारा जो अपना जो गवर्नमेंट ने उसको सही वहाँ पे जगह में लेके बिठाया, इसके लिए उन्होंने काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर किया। और साथ ही साथ हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो मेजर जो रेवेन्यू अर्निंग जो रिसोर्स है वो है हाइड्रो पावर सेक्टर, और हाइड्रो पावर में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी जो पेन्योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो 400 मेगावाट का, उसको भी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने में निरंतरम साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। निरंतरम साहब को गुजरने से नॉट ओनली फॉर द निसी समाज, पूरे अरुणाचल में काफ़ी बड़ा एक लॉस हुआ है। वो बहुत ही सिंपल एक पर्सन था, बहुत ही सिंपल आदमी था, और उनको मैंने अपना लाइफ में कभी भी कैजुअल ड्रेस में कभी देखा नहीं। जब भी मैं उनका घर जाता हूँ मिलने के लिए, हमेशा वो फॉर्मल ड्रेस में ही पहन के हमेशा बैठता था। सो इस तरह का आउटलुक था, और ख़ास करके यंगर जनरेशन्स को हमेशा वो गाइड करता था। अपना समाज में भी जो खराब प्रैक्टिस होता है उसको भी किस प्रकार से सुधारना है, मैंने काफ़ी बार देखा कि अपना समाज के लोगों के साथ में भी वो काफ़ी इंटरेक्शन वो करते थे। सो इस प्रकार से निरंतरम जाने से काफ़ी सेटबैक हुआ है, ये स्टेट को बड़ा ही नुकसान हुआ है। और उनका फ्यूनरल में हमको वहाँ हमको पार्टिसिपेट करने का हमको मौका मिला है, और वहाँ में मैं देखा कि नॉट ओनली फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी, जितने भी जो हमारा अरुणाचल में जो वेरियस फेथ फॉलोवर्स है, चाहे वो बुद्धिज़्म से हो, चाहे वो हिंदू से हो, या इवन अपना इंडिजिनियस फेथ से हो, सभी के लोग वहाँ आके काफ़ी उनका महसूस किया कि सबको बड़ा एक लॉस ये फील हुआ है। तो निरंतरम साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा हम लोग याद रहेंगे। और अंत में लेट सिटी मेन साहब का बारे में एक दो शब्द में कहना चाहेंगे। लेट सिटी मेन साहब तो बहुत ही सीनियर एक पॉलिटिशियन एक रह चुका है। सिंस जो हम लोगों का प्रदेश काउंसिल टाइम से, जब 1972 से जो प्रदेश काउंसिल बना, तब से लेके इसके बाद 1975 में जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बना, तब से लेके 87 में जो स्टेटहुड का अपना यहाँ में दर्जा मिला, तब से ही वो यहाँ पे एज एन MLA भी इलेक्ट करके हम लोगों के बीच में काफ़ी हम लोग का मिलने का हम सबको सौभाग्य मिला। तो लेट सिटी मेन साहब तो जैसे मैंने कहा है कि बहुत ही सीनियर एक पर्सनालिटी है, मगर बहुत ही काम और बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी। लाइफ में इस प्रकार का पर्सनालिटीज़ बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। उन्होंने एज एन मिनिस्टर वेरियस पोर्टफोलियोज भी संभाला। हमको याद है कि जब अपना सरकार जब यहाँ पे बना 2016 में, तो उस वक्त में भी वो एज एन MLA और एज एन एडवाइज़र हमारे साथ भी काम किया इन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। जब 2019 का जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जब होने को आया, तो उन्होंने बताया कि हमको कि अभी मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं पॉलिटिकली हम रिज़ाइन लेंगे। लेकिन उसका बावजूद भी हम लोग ने देखा कि अपना समाज में काफ़ी बड़ा योगदान वो करते थे। और वहाँ के जो MLA अपना चाउ जिग्नू नामचुम साहब ने भी जो बताया कि खास करके जो डिज़ास्टर उसमें काफ़ी प्रोएक्टिव वो हमेशा अलर्ट होके अपना काम करता था। और हमें याद है कि 2016 में मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद इमीडिएटली आफ्टर 2 डेज़ मैंने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूंसी टूर किया है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जाके मैंने टूर किया था। और वो भी ऐसे नहीं कि CM बन गया बोल के कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए, और वो भी उस वक्त में था जब पूरा उस नामसाई एरिया में पूरा फ्लड जब चल रहा था, तब जाके मैंने वहाँ पे टूर किया। तो हमने वाकई रियलाइज़ किया कि जो भी प्रॉब्लम जो वहाँ आते हैं, ग्राउंड में बैठ के सिटी मेन साहब बैठ के लोगों के साथ मिल के उनका
रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में किस प्रकार से लोगों को सहयोग को वो करते थे। सो उनका काफ़ी हमारा तो काफ़ी क्लोज एक एसोसिएट है, काफ़ी सीनियर एसोसिएट, और जब उनका निधन हो गया तो मैं वहाँ नामसाई उनके घर में भी गया। और जैसे एक दो मेंबर हमारा जिनी साहब ने जो कहा कि वो वाकई बहुत ही सही है, और हम सब मेंबर जो वहाँ पे प्रेजेंट था हम लोग ने भी विटनेस किया। वहाँ में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केवल अपना खमती एरिया से नहीं बल्कि एंटायर अरुणाचल प्रदेश से, इसके बाद आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पे आए थे। तो मैं अपनी ओर से और अपने परिवार और हम सभी सदन के मेंबर्स और अरुणाचल प्रदेश के पूरे जनता की ओर से ये जो तीन महान जो सोल आज हम लोग का बीच में नहीं रहा, लेट कर्दो टाइपोदिया जी, लेट नीरम तरम जी और लेट सीटी मैन साहब, उनको हम सब लोग फैमिली मेंबर्स को कॉन्डोलेंस मैसेज माननीय स्पीकर साहब आपके माध्यम से हम लोग देना चाहेंगे। और भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका सोल को ब्लेस करे और इस मुश्किल घड़ी में परिवार जनों के साथ में भगवान उनको हमेशा साथ दे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि इन तीनों जो महान आत्मा ने बहुत अपना राज्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है, अपना रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो माननीय स्पीकर जी आपका माध्यम से अभी के हमारे जो मेंबर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन तीनों महान आत्माओं को नाम में कुछ गवर्नमेंट जो संस्था होता है उसको डीसी लेवल में मीटिंग करके रिकमेंड कीजिए, हम लोग उनका रीनेमिंग स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग अप्रूव कर देंगे, ताकि आने वाला दिनों में भी जो युवा पीढ़ी जो है उनका योगदान को हमेशा याद रखे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपना शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Now there is no more speakers to take part. So as a mark of respect, the House will stand in silence for 2 minutes for the departed soul. Thank you. Now the Secretary may send the condolence message to the bereaved family. The next item, we have the honorable members. I have received a request from Sri Wangki Loang, Honorable Minister, Srimati Dasanglu Pool, and Srimati Chaka Tabo for leave of absence. I have allowed their request. Now the Secretary to report the bill assented by Honorable Governor. Honorable Speaker, sir, I rise to report the following bills assented to by the Honorable Governor of Arunachal Pradesh. 1. The Arunachal Pradesh Goods Tax Amendment Bill 2023. Number 2. The Arunachal Pradesh Protection of Drinking Water Catchment Area Bill 2023. Number 3. The Assam Frontier Administration of Justice
Regulation Amendment Bill 2023. Number 4, the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2023. Number 5, the Arunachal Pradesh Appropriation Number 2 Bill 2023. Thank you. As an humble attempt to empower the women, this time we have all women panel of chairmen for this current session. And the names are Srimati Jumum Etediuri, Srimati Dasangdupul, Srimati Chakatabo, and Srimati Thiringlamu. Now, presentation of BSc reports. Sri Bamang Felix, Minister of Parliamentary Affairs, may present the report. Mr. Speaker, sir, I rise to present the 10th report of Business Advisory Committee. Next item is adoption of BSc reports. Sri Bamang Felix, Minister of Parliamentary Affairs, may move the motion. Mr. Speaker, sir, I rise to move the following motion that this House agrees with the 10th report of the Business Advisory Committee. I will now put the motion to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Sri Chonamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance, Planning and Investment, Power and NCER. General and Revenue Sector for the year ended 31st March 2022 relating to the Government of Arunachal Pradesh within bracket report number 2 of 2023. Now we'll take up bills for introduction. Now Bill Sri Kamlung Mosang, Minister of Town Planning, may move the motion for the leave of the House to introduce the Arunachal Pradesh Airport Area